This is it, man. मतलब once you cross Global Foyer and Dell का office, after that you come across Camellias, Magnolias, Ralias, and then this American Express का office, and one horizon, two horizon. This is like Apple of real estate. That's why Apple has their office here. I was talking about the mansions of gods, aka Camellias, Magnolias, and Aralias. So I just got a latest update about the pricing. So 7,500 square feet at Camellias, 4-bedroom apartment, 55 crore rupees. Hi, I am Naveen Tomar from Course Realty, your host for this video. And आज मैं खड़ा हूँ गुड़गांव की सबसे सेंट्रल लोकेशन, the epicenter of Gurgaon, Huda city center. It started in 2010 और तब से लेके अब तक it has become the lifeline of Gurgaon. हमारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का है कि we want to show you one of the most promising upcoming residential projects in Gurgaon. अब तक मैं आपको यूजुअली जो प्रोजेक्ट्स दिखाता था वो या तो साइट पे शूट होते थे, सैंपल अपार्टमेंट होता था उनका, या फिर वो मेरे अपने स्टूडियो से शूट करता था जिसमें मैं यूजुअली रिसर्च, एडवाइजरी और इन्फॉर्मेशन शेयर करता था. बट वी थॉट कि हम कैसे अपने वीडियोस को और एंगेजिंग और एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेशनल बनाएं. सो वी थॉट अबाउट कि वी विल स्टार्ट दिस टूर फ्रॉम हुड्डा सिटी सेंटर, देन वी विल मूव टू गोल्फ कोर्स रोड, आफ्टर दैट वी विल मूव टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, एंड फाइनली वी विल एंड आवर टूर at New Gurgaon, and we will explore everything. I'll explain a lot of things. It is going to be a very informational and epic video of ours. So stay tuned till the end of this video and don't miss any second of this video. So we've got a lot to cover and very less time. Without any further delay, let's get going. मैं आपके साथ में बहुत सारा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे क्या था क्या नहीं था, अभी कहाँ पे क्या रेट हो गया है, वो सभी उन रूट्स पे जब हम चलेंगे तो मैं आपके साथ में शेयर करता हुआ चलूँगा. सो साथ ही चलो. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टूर फ्रॉम हुड्डा सिटी सेंटर. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड और चौराहा. यहाँ से एक रोड सोना रोड की तरफ जाता है, एक एमजी रोड की तरफ जाता है, एक एक्सटेंशन रोड की तरफ जाता है, गोइंग थ्रू सेक्टर 52, 55, 56, हांगकांग बाज़ार वाली जो रेड लाइट है वहाँ पे इट इंटरसेक्ट्स विद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. और एक रोड जिस पे अभी हम चलेंगे गोज़ टुवर्ड्स गोल्फ कोर्स रोड. इस रोड पे एक तरफ आपका सुशांत लोक है और एक तरफ DLF Phase 4 है. ये लोकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट अपस्केल लोकेशंस. वी विल कवर अप देम in while going, and I will share all the information. आपका जो सुशांत लोक है वहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स का जो प्राइस है इट इज़ समवेयर बिटवीन 11,000 to 12,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट. जो प्लॉट्स हैं वो 2.5 लाख पर स्क्वायर टू 2.75 लाख पर स्क्वायर, 2.5 लाख से 2.25 लाख रुपए गज के बीच में है. ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग जो है वो DLF Phase 4 में भी है, 10-20 हज़ार रुपये का इन टर्म्स ऑफ दी प्लॉट प्राइसिंग डिफरेंस है पर स्क्वायर यार्ड, और 1,000-1,200 रुपये का जो डिफरेंस है वो है इन टर्म्स ऑफ दी पर स्क्वायर फीट प्राइस ऑफ द बिल्डर फ्लोर्स. सो जैसे ही हम राइट टर्न लेते हैं ना इस पे गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर फ्रॉम द रोड विच कम्स फ्रॉम हुड्डा सिटी सेंटर, तो यहाँ पे दो मेन बिल्डिंग्स आती हैं. एक तो ग्लोबल फोयर है विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स ऑन दिस रोड. वहाँ पे स्ट्राइकर्स एक पब होता था. इट गेट्स मी नॉस्टैल्जिक. एनीबडी हु हैज स्पेंट देयर टाइम इन गुड़गांव अराउंड 2012, 13, 14 मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. तो ये भी पहले ऑफिस स्पेस और रिटेल इतना पॉपुलर नहीं था, बट लेटर ऑन दे टुक अ डिसीजन और दे कन्वर्टेड इनटू फूड एंड बेवरेजेस. उसके साथ में उसके ऑपोजिट अभी गोदरेज एक नई प्रॉपर्टी लेके आ रहा है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल यार. मतलब इट इज़ कमिंग अप सो वेल एंड दे आर बेंच मार्किंग इट विद DLF 1 horizon, 2 horizon. They are also planning to lease their office space at rupees 200 per square feet approximately. उसके साथ में ही डेल का ऑफिस है और विपुल टेक स्क्वायर है. डेल का ऑफिस तो मतलब मैं गुड़गांव 2008 में आया था तो तब से ही देखता हुआ आ रहा हूँ. इट इज़ लाइक इटर्नल सा फील होता है कि ये यहीं है और यहीं रहेगा.
बट और जैसे उससे आगे मूव करते हैं तो आपका मेट्रो स्टेशन आ जाता है, रैपिड मेट्रो स्टेशन सेक्टर 42, 43। दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट DLF। जैसे आप इस एरिया में एंटर करते हो ना, यू गेट दैट वाइब। DLF इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट मूव इन एक्सपीरियंस, अराइवल एक्सपीरियंस। और फिर गोल्फ कोर्स रोड की जो शान है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, विच आई कॉल दी मैंशंस ऑफ गॉड्स, अरालियाज, मैग्नोलियाज एंड कैमेलियाज, दे आर सुपर्ब मैन। व्हेन यू एंटर, वो जो एक एम्बियंस क्रिएट होता है, वाइब क्रिएट होता है, एक्सेप्शनल है। दिस इज इट मैन। मतलब वंस यू क्रॉस ग्लोबल फॉयर एंड डेल का ऑफिस, आफ्टर दैट यू कम अक्रॉस कैमेलियाज, मैग्नोलियाज, अरालियाज, and then this American Express का office, and one horizon, two horizon. This is like Apple of real estate. That's why Apple has their office here. And exceptional feeling है यार, phenomenal. I mean, it is at par with any international standard, central business districts anywhere across the world. You get that, I don't know what you call in Gen Z, but that it is vibing man, it is vibing. ये साउथ पॉइंट मॉल भी है ना, मतलब जस्ट आफ्टर यू क्रॉस जनपेट का चौराहा तो साउथ पॉइंट मॉल आता है, वाज टॉकिंग अबाउट इट। तो ये भी अपने आप में एक केस स्टडी है। शुरू में ये इतना सक्सेसफुल नहीं था, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी लीजिंग थी नहीं इसके अंदर, बट लेटर ऑन बिकॉज द कैचमेंट वाज एक्सेप्शनल, द सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन वाज एक्सेप्शनल। तो अब यहाँ पे जो ब्रांड मिक्स है ना, एक तो ये ऑलमोस्ट फुल है, और ब्रांड मिक्स भी बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल डिफरेंट मॉल्स। यहाँ पे आपका लीमार्श है, एंड आई हैड रिसेंटली सीन कि एक कोवर्किंग स्पेस है फॉर म्यूजिशियंस। तो मैं कहता हूँ कि रियल एस्टेट भी जो है ना, वो बॉलीवुड की तरह है, समटाइम्स इट टेक्स टाइम, बट जब बाद में निखर के आता है तो it becomes फटा पोस्टर निकला हीरो, and then it becomes a superstar, and people say it has become a superstar overnight, but it has taken its own journey. तो टाइम लगता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में, सो यू शुड ऑलवेज हैव पेशेंस व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट। अब बात करते करते वी हैव कम टू वाटिका नाउ। वाटिका एट्रियम, ये भी बहुत, यहाँ पे कोपल पार्टनर्स का ऑफिस होता था जब मैं 2008 में आया था, और जैसे हम अब आगे मूव कर रहे हैं, सो वी आर कमिंग टूवर्ड सेक्टर 54 मेट्रो स्टेशन, रैपिड मेट्रो स्टेशन। इसके साथ में ये ला लगून है, सैलकॉन वेरांडाज है, और यहीं पे पोर्शे का ऑफिस होता था, मतलब पोर्शे का शोरूम था। ये 2014 में शायद पोर्शे वालों ने ख़रीदी थी, तपस्या ग्रुप वालों से, अराउंड 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास। अब इसकी भी वैल्यू 50, 60, 70 हज़ार रुपये फुट से ऊपर है। और इसी के साथ में जो है वो ट्यूलिप का मुनसेला प्रोजेक्ट है, विच इज़ ऑल्सो अगेन वन ऑफ दी मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स ऑन दिस रोड। और अभी कुछ नया है भी नहीं इस रोड पे, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने वो ख़रीदा भी है। विल डेफिनेटली कवर इट अप वेरी सून, बट आप लोगों का सपोर्ट इतना है कि मेरा फ़ोन बजता ही रहता है, मैं हर टाइम बिज़ी ही रहता हूँ, तो नए शूट्स करने का टाइम बहुत कम लग पाता है, और हमें टाइम भी बहुत लगता है एक शूट को करने में, बिकॉज वी वांट टू गिव यू द बेस्ट, वी वांट टू क्रिएट ऑसम वॉक थ्रूज, और उसमें थोड़ा समय लगता है। वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ करने में समय तो लगता है। आई डोंट नो, देयर इज़ अ सॉन्ग एज वेल कि वक्त तो लगता है कुछ, या कोई शायरी है, सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। और ये बात करते करते वी हैव कम टू द क्रॉस रोड सेक्टर 55, 56 का। इसको पहले अंसल चौक बोलते थे, अब यहाँ पे बड़ा सा आई लव गुरुग्राम लिख दिया इन्होंने, तो बहुत अच्छा लगता है ये। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ गोल्फ कोर्स रोड एंड द टी पॉइंट। From there we'll take the right turn and we'll go to the site, which is the first site of the project, which is Emaar 62. It is an upcoming project of Emaar. बाकी की information site के ऊपर जाके ही बताऊंगा। So let's get to the site now. तो अभी हमने एक बिल्डिंग क्रॉस की थी, ईमार डिजिटल ग्रीन्स। जैसा मैंने बताया था कि रियल एस्टेट इज़ लॉट लाइक बॉलीवुड, तो ये बिल्डिंग भी ऐसी बिल्डिंग थी इनिशियली इन 2013-14 आई गैस। उस टाइम पे 6500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का भी रेंटल, मतलब वो सेल प्राइस नहीं मिलता था लोगों को। आज यहाँ 15,000, 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में भी चीज़ नहीं मिलती है, स्पेस नहीं मिलता है, और रेंटल इज़ टचिंग 85-90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो ये भी एक ऐसी ही
केस स्टडी है कि इनिशियली इट वाज सपोज टू बी अ फेलियर और it became a failure in people's eye, but it was not. It was an exceptional property. जैसे शोले मूवी थी, इनिशियली वो लोगों ने उसको कंसिडर कर लिया कि एक फेलियर मूवी है, but later on it achieved a monumental success. So again, one more example of having patience and waiting for the right time for your real estate investments to give you the right yield and right returns. So we are almost about to reach the site now, and we'll take a left turn from the golf course extension road towards the site, and within 2 minutes we'll reach the site now. We took a left turn from golf course extension road. From JMD Empire building is there, the red light, and it took only 1 to 2 minutes to reach the site. It is a 60-meter wide road. The project is located on 60-meter wide road with green belt and service lane as well. It is right behind us. You can see the site in the background or in the aerial shots as well. The site size is approximately 9.5 acres of land, over which 4 to 5 towers will come, which means it will have 70 to 80% of open area. Emaar, being a global giant known for creating global real estate projects, will definitely come up with great amount of amenities and facilities which can be at par with international standards, top of the line, top of the class. The tentative size that we have come across to know from market sources, though there is no official statement from the developer because it is still in the pre-launch stage, is the clubhouse is going to be around 60,000 square feet, which is sufficient for this size of project. In order to create a luxury project, the next thing is location. किसी भी प्रोजेक्ट को लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने में जितना रोल उसकी अमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ का होता है, उतना ही उसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है. तो अगर सेक्टर 62 की मैं बात करूं, सो इट इज़ अ vertically located sector which has got all the major social infrastructure points around it. Talking about malls, hospitals, schools, even metro connectivity we have already discussed. Rapid metro station is only 10 to 12 minutes drive from here. Extension road is close by. The major markets nearby is M3M Urbana, Worldmark. You have AIPL Business Club, which is an office complex. We've covered that in one of our previous videos. It is an exceptional product. You should look at it. I'll put the link in the description and the I button above. So, and in terms of the socio-economic classification, we've got all the premium projects in and around in sector 62. So you've got Trump Tower, M3M Golf Estate, Conscient Habitat, you've got Digi Homes, and Emaar's its own premium and luxury projects in the vicinity. There are a lot of other things as well, like the sector plan and everything. So we've got all that with us, but we are very short of time. We've got to cover a lot of other projects as well in the same video. So I would request that you call us and book a meeting appointment and we can discuss this one-to-one. So let's get to the next project. So we are moving towards our next project, which is Pyramids Sector 71 luxury project. तो अभी मूव करते हैं, तो मूव करते करते वी विल डिस्कस सर्टेन थिंग्स एज वेल. सेक्टर 62 की कनेक्टिविटी तो आप लोगों ने देख ही ली है. दिस प्रोजेक्ट आई थिंक इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट प्रोजेक्ट. ईमार 62 आसपास एक चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गया था. येस, दिस रोड, दिस 60 मीटर वाइड रोड लीड्स स्ट्रेट इनटू अ रोड which is kind of a ring road which encircles the entire Gurgaon. It is a 90 meter wide road. In fact, after crossing a certain boundary, the 60 meter wide road also widens up. और ये सेक्टर 62 में जो ईमार का 62 का प्रोजेक्ट है, इससे बस हार्डली 2 मिनट आगे ही DLF आर्बर है, जो कि बस क्या मतलब, इट वाज अ सुपर बस, टॉक ऑफ द टाउन, सिंगल प्रोजेक्ट, 1300 यूनिट सोल्ड इन 1 डे, और वो भी 6 से 7 करोड़ रुपए की एक यूनिट. और करंट में जिन लोगों ने वहाँ ख़रीदा है, they are getting a premium of more than 50 to 80 lakh rupees. Yes, 50 to 80 lakh rupees. So if you also want to, kind of get that kind of appreciation and premium, so you should not miss these pre-launch projects. Pre-launch का concept ही यही होता है that you buy a product at a very good price. In fact, entire investment game is about buying a property or any kind of asset at right time at the right price. So let's get moving.
I will keep on explaining other things as and when they come. We are on our way to our next project, which is Pyramid Sector 71 project. So we just started off from Sector 60 to Emaar Urban Oasis. Uske baad mein we again got back on Golf Course Extension Road. We have just crossed an important landmark point, which is M3M IFC. ये भी building वैसी है जैसे one horizon, two horizon है. They thought about it that we are going to create a landmark and benchmark it with the same kind of building, and they sort of have, you know, been successful as well. काफ़ी अच्छी breweries, काफ़ी अच्छे brands. In fact, विराट कोहली का एक brand है 18 Commune, that has also come over there. Social has opened up their outlet over there. So it has become a very hustling and bustling kind of place. Even office space, they are tentatively leasing it at around 120-125 rupees per square feet, which is way higher than the market rate. This is how One Horizon, Two Horizon also did. So it is all about positioning your product, positioning your brand, and after this we are going to, you know, sort of come on Sona Road, which is the kind of end of Golf Course Extension Road. After that, Southern Peripheral Road starts. So Golf Course Extension Road and Sona Road converges together at a crossroad, और ये Sona Road वही है जहाँ पे elevated दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है. सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है. एंड टॉकिंग अबाउट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, अभी ये इतना वाइड नहीं, आगे और वाइड होगा. एंड देयर आर लॉट ऑफ, you know, underpasses and flyovers planned. So in future, even golf course extension would look like golf course road itself. As and when something more comes up, I'll update you. So let's get going. और अभी थोड़ी भूख भी लग रही है. I'm hungry, so we'll probably stop for a halt. You can also stop. So our stop is Reach 3 Roads, which is again a great market. You'll get to see that as well. I'll explain a little bit about that as well. But it is a very good market, and I'll grab something and then we'll go to the site. So the way a soldier is never off duty, same way as a sales guy is never off duty. We came here just to grab something, but I could not resist myself. So this is a great, you know, marketplace, mid-scale marketplace. It has got every possible brand that you can think of: Haldiram's, Tata Croma, McDonald's, Moti Mahal Deluxe, Wow Momos, Domino's, Sagar Ratna, just to name a few. And it has got a great potential for appreciation. तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब बहुत सारी तो नहीं है, कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री ही बची है अब तो. So we have got rented and non-rented both kind of properties here. So if you want, if you like this place, if you ever come across this place, and if you feel like buying something, you can always contact us for buying a property here, and we'll give you the best deal possible. And yes, I was talking about the mansions of gods, aka Camellias, Magnolias and Aralias. So I just got a latest update about the pricing. So 7500 square feet at Camellias, 4-bedroom apartment, 55 crore rupees. 9500 square feet, 5-bedroom apartment, 58 crore rupees. 11,000 square feet, same Camellias, 5-bedroom apartment, 68 rupees. So we've got everything, be it an upscale, most premium, or a value for money deal, whether it is commercial or residential. You can always bank upon us, always talk to us. Let's get going. Let's get to the next project. So after driving 7 to 8 minutes from Badshahpur Chowk or Vatika Chowk, we took a right turn, and within 1 minute drive we reached the site. So this is the site of Pyramid Sector 71, new upcoming residential luxury project. साइट का जो साइज़ है इज़ अबाउट 5.25 एकर्स. जो प्रोजेक्ट प्लान किया है, जो टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से ग्राउंड प्लस 43 फ्लोर्स की हाइट होगी इसकी. एंड देयर विल बी अ क्लब हाउस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 60,000 स्क्वायर फीट विद ऑल अमेनिटीज़ दैट यू कैन थिंक अबाउट. क्योंकि अमेनिटीज़ आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सभी डेवलपर्स अच्छी दे रहे हैं, मॉडर्न दे रहे हैं, जैसे जैसे अपग्रेडेशन आ रही है. 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, उसके अंदर 2 स्विमिंग पूल भी होंगे, इंडोर आउटडोर. अबाउट 2 to 2.5 एकर्स ऑफ ओपन ग्रीन एरिया रहेगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर सच अ स्मॉल साइज प्रोजेक्ट, बुटीक प्रोजेक्ट. 3 टावर्स होंगी इसके अंदर टोटल. सो कवरेज, ग्राउंड कवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है. सो यू विल हैव अ वेरी गुड ग्रीन व्यू एज वेल एज द सिटी स्केप इफ़ यू गो टू द हाइट. सो बोथ द एलिमेंट्स आर देयर. और जो टेंटेटिव साइज़ है वो 2350 स्क्वायर फीट के आसपास का है, जिसके अंदर 3 bedrooms, 4 washrooms, servant room and a puja room would be there.
बाकी आजकल सभी डेवलपर्स सेमी लोडेड अपार्टमेंट्स देते हैं, लाइक अ लैम्प लोडेड किचन, मार्बल, Italian marble or imported marble in the living and dining area, wooden floorings in the bedrooms, and tile work, premium tile work in the washrooms. Now, next thing is about location. So let's talk about the location of this project. So after driving for 6 to 7 minutes from Badshahpur Chowk or Vatika Chowk, and you take the first right turn from Whiteland Urban Cubes, you reach the site. So it is very well connected from Badshahpur Chowk, Sona Road, Golf Course Extension Road we have already covered till now. और यहाँ से इस right cut लेने से पहले अगर आप straight आगे निकल जाते हैं, then you hit Dwarka Expressway on Cloverleaf Bridge. So connectivity wise there is no challenge. NH8 as well as Sona Road, both are conveniently placed. They are hardly 5 to 7 minutes drive from here. Dwarka or IGI airport, I think after the completion and running of Dwarka Expressway would only be 25 to 30 minutes away from here. In terms of the social infrastructure, हॉस्पिटल्स आपके यहाँ पे मेदांता है, सूरज स्कूल है यहाँ पे आसपास, एंड देन यू गॉट पार्क हॉस्पिटल. इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स, अभी 3 रोड से हम आ ही रहे हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था वहाँ से, हार्डली 2 से 3 मिनट लगे यहाँ पहुँचने में. वहाँ पे ट्यूलिप की पूरी सोसाइटी है, 2-3 और मार्केट्स भी हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स भी खुले हुए हैं फॉर नॉर्मल नीड्स ऑफ विजिटिंग अ डॉक्टर, और आपकी डेली नीड्स के लिए, कन्वीनियंस के लिए बाकी सब कुछ अवेलेबल है आसपास. And on top of that, you've got DLF Almeda, which is about 225 acres of township of DLF, which is a low-rise township, plotted development township, which is almost completely developed, and beautiful houses are being constructed over there, floors, villas, everything. वो भी बिल्कुल सामने है. तो DLF के होने का एक पॉजिटिव पॉइंट इस लोकेशन पे ये रहेगा, क्योंकि DLF जहाँ पे भी जाता है वो हमेशा अराइवल एक्सपीरियंस पे काम करता है, तो उसका अराइवल एक्सपीरियंस आपके अराइवल एक्सपीरियंस पे ऐड हो जाएगा, और DLF के आसपास की जो कैचमेंट होती है वो हमेशा इवेंचुअली प्रीमियम ही बन जाती है. तो इस हिसाब से ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है. बट येस, इफ़ आई कंपेयर इट विद ईमार 62, तो उसके मुकाबले यहाँ पे हैबिटेशन थोड़ी सी कम है. बट उसका रीज़न भी ये है क्योंकि यहाँ पे यूनिटेक की बहुत सारी लैंड थी, एंड यूनिटेक बिकेम अ फेलियर. उसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई. अदरवाइज इट वुड हैव बीन मोर डेवलप्ड देन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. एंड प्राइस की बात करूँ तो ईमार से इसका प्राइस ऑलमोस्ट 75% है. सो all in all, it is a very good deal if you are looking for an ultra luxury apartment. एक ही साइज रखा है इन्होंने 2350 स्क्वायर फीट का, which is also very good. So the whole environment, all the people living here would be of the same category. So अभी जो next point है जहाँ पे हम जाने वाले हैं after pyramids project is sector 76 and 77. Sector 76 और 77 में DLF has got more than 225 acres of land, anywhere between 250 से 250 एकड़ के बीच में लैंड पार्सल है उनका, इंक्लूडिंग लाइसेंस्ड एंड नॉन लाइसेंस्ड लैंड. मतलब कुछ का उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, कुछ का नहीं लिया हुआ है, बट रेरा भी अप्लाई नहीं किया है, या किया हुआ है तो अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो उस सेक्टर में भी DLF इज प्लानिंग टू कम अप विद समथिंग. देव गॉट अराउंड 25 to 20 acres of land over there. अगर लोकेशन की बात करूं तो सेक्टर 77 और 76 हैज़ गॉट अ वेरी गुड एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि एक तरफ तो सदर्न पेरिफेरल रोड के थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे से जो CPR है वहाँ से कनेक्टेड हो जाता है. CPR विल बिकम द फ्यूचर इफ़को चौक. जैसे पहले ओल्ड MG रोड होता था, उसके बाद में इफ़को चौक बिकेम द एपी सेंटर और द सेंट्रल पॉइंट. Now nobody knows old MG road and old दिल्ली गुड़गांव रोड, राइट? तो ऐसे ही आने वाले टाइम पे जब द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाएगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे गेट्स कनेक्टेड इनटू योर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे फ्रॉम सोना रोड. तो ये बहुत ही अच्छा एक सर्कल बन जाता है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी. सो अब 77 और 76 की लोकेशन की अगर हम बात करें तो एक तरफ सोना रोड क्लोज पड़ता है इसके, और दूसरी तरफ न्यू गुड़गांव का एरिया क्लोज पड़ता है. एंड द सेकंड नेचुरल
point which comes to 77 and 76 is the Aravalli ranges. इसके बिल्कुल opposite Aravalli ranges हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी जंगल सफारी का भी प्लान किया है, which is about 10,000 acres of land which has been demarcated for जंगल सफारी प्रोजेक्ट. तो वो भी अपने आप में एक नया अट्रैक्शन होगा. लॉट ऑफ पीपल विल फ्लॉक इन, और जहाँ जहाँ जैसे जैसे लोग मूव इन करते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है. उसके अलावा अगर कमर्शियल एंगल से भी देखें तो दो इम्पॉर्टेंट कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो सेक्टर 77 और 76 के पास में पड़ती हैं. एक तो बिल्कुल ही पास है विच इज़ सेक्टर 74A, जहाँ पे DLF के पास में अबाउट 250 एकर्स ऑफ कमर्शियल लैंड है. वो सारा सेक्टर ही कमर्शियल है, जहाँ पे वो जो कैंपसेस हैं वो लेके आएगा. मतलब जैसे साइबर सिटी इज़ अबाउट 90 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, लेकिन वहाँ पे क्या है, अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग कंपनीज हैं. यहाँ पे वो एक बिल्डिंग में एक कैंपस होगा, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस अभी यहाँ पे आया है, एक बिल्डिंग में एक कंपनी का एक कैंपस होगा. तो यू कैन अंडरस्टैंड द मैग्नानिमिटी, द साइज, शेयर साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट प्रोजेक्ट. उसके बाद में जो गुरुग्राम ग्लोबल सिटी जो कि एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है हरियाणा गवर्नमेंट का, वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे से. सेक्टर 37D के पास में ही, C और D के पास में ही पड़ता है. वो भी पटौदी रोड पे, वो भी अबाउट से 1500 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल है, जिसके ऊपर वहाँ पे भी वो दुबई मरीना बे जैसा प्रोजेक्ट बनाने का प्लान कर रही है. तो ये दो कमर्शियल सेक्टर्स भी पास में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो. ऑन टॉप ऑफ दैट DLF है, तो DLF ऑलवेज ट्रांसफॉर्म्स एवरीथिंग. बेस्ट पार्ट अबाउट DLF इज दैट दे डोंट ओनली बिल्ड प्रोजेक्ट्स, दे डोंट ओनली बिल्ड रोड्स, दे बिल्ड इकोसिस्टम. अगर आप देखोगे DLF Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5 एंड साइबर सिटी, वो रैपिड मेट्रो लेके आए हुडा गवर्नमेंट के साथ जॉइंट वेंचर में, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ और हुडा अथॉरिटी के साथ में, नॉट दीपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा गवर्नमेंट स्पेसिफिकली. आई मेंट टू से अथॉरिटीज़ के साथ में जॉइंट वेंचर में रैपिड मेट्रो लेके आए, वो भी इतने साल बाद, ताकि उनकी प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो और एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव हो और प्राइसेस इम्प्रूव हो. उसके बाद 20-20 साल बाद भी जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर पैसा लगाते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, अपग्रेड करते हैं, रिपेयर करते हैं. तो वो एक अलग विजन है उनका. तो जब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आएगा वो भी अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ बन के आएगी. बाकी जो है वहाँ पे जो वैसे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट अनऑफिशियली जो मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप रूमर कह सकते हो, उसको इन्फॉर्मेशन कह सकते हो, या फिर इन्फॉर्मेशन, कैसी भी इंफॉर्मेशन कह सकते हो. उसके हिसाब से यहाँ पे वो 25 to 20 एकर्स ऑफ लैंड में ग्राउंड +10 के आसपास का मिड राइज अपार्टमेंट्स लेके आएंगे. बड़े साइज़ के अपार्टमेंट्स लेके आएंगे 4 BHK, अबाउट से 3200 to 3600. सो वी हैव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड नाउ the mountain ranges and we are about to reach the site now, and I'll show you the site. You can understand what it is all about. We've got sector plans as well, we've got other things which are in plan in those sectors. We will share that on a one-to-one basis with you, because this is a pre-launch project video. Nothing much is available in the market. जो भी है वो internal ही discussion में है या फिर अटकले ही हैं. So finally we have arrived at sector 77. ये जो मेरे पीछे आप बाउंड्री वॉल देख रहे हो, this is the boundary wall of DLF sector 77 land, जहाँ पे मैंने आपको बताया they might come up with something new. ये वो बाउंड्री वॉल है, ये चारों तरफ है. This is about 25 to 28 acres of land. और ये this is at the corner of sector roads. एक तरफ ये sector road है which is about 84 meter, 60 meter road and 12 मीटर की दो ग्रीन बेल्ट्स. सेम 60 मीटर वाइड रोड इसके दूसरी साइड है. तो एक कॉर्नर का प्लॉट है जो कि अपने आप में एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लॉट और लैंड पार्सल हो जाता है. इसके ऑपोजिट सेक्टर 76 है, वहाँ पे भी DLF की काफ़ी लैंड है. सो आफ्टर दिस ऑन दिस सेम रोड वी हैव गॉट अनदर साइट विच बिलोंग्स टू a developer which is from Faridabad, and they're launching their first project in Gurgaon. So let's check out that project as well. The next project site that we are going to visit is Adore the Select Premia. ये फरीदाबाद बेस्ड डेवलपर है. इन्होंने वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप की है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा इनका नाम भी है. सो यहाँ पे गुड़गांव में इनका पहला प्रोजेक्ट है.
जो साइट की लोकेशन है वो DLF की लोकेशन से हार्डली 800 to 1 किलोमीटर अवे है। आई थिंक इनफैक्ट इट इज़ लेसर देन दैट, सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव है। ये साइट जो है वो टोटल 10.20 एकर्स ऑफ लैंड है। जो जो साइट है वो एकदम काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर है इन शेप, विच इज़ वेरी कंजेनियल टू डेवलप अ गुड प्रोजेक्ट। टोटल इसके अंदर जो है 12 टावर्स लेके आएंगे ये लोग, और ग्राउंड प्लस 13 का स्ट्रक्चर रहेगा। साइज़ जो है इनका 3 BHK है, फिर 3 BHK प्लस सर्वेंट है, एंड 4 BHK प्लस सर्वेंट है। 3 BHK इज़ अबाउट 1700 स्क्वायर फीट, 4 BHK 3 BHK plus servant is 2000 square feet and 4 BHK is roughly 2400 square feet। काफ़ी अच्छा पेमेंट प्लान भी लेके आएंगे, तो वो पेमेंट प्लान वी विल डिस्कस इन 1-to-1 in detail because we just want to wrap up everything in time। In terms of the architect, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से इनकी बात चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली दे विल फाइनलाइज हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। जो भी अंदर ये लोग फिटिंग्स एंड फिक्चर्स देंगे वो सब प्रीमियम रखने वाले हैं, लाइक अ फुली लोडेड किचन, इटालियन मार्बल इन लिविंग एंड डाइनिंग, वुडन फ्लोरिंग इन द बेडरूम्स, एंड प्रीमियम टाइल फिटिंग्स इन द वॉशरूम, एंड CP एंड चाइना वेयर फिटिंग्स फ्रॉम सम प्रीमियम ब्रांड। अभी ये सिर्फ प्री लॉन्च स्टेज पे है, दे आर फाइनलाइजिंग द वेंडर्स, तो अभी एग्जैक्ट किस ब्रांड और किस मेक का क्या आने वाला है ये कह पाना मुश्किल है, बट they are going to develop a premium luxury society। The USP of this project is the location and its pricing। About 9,000 rupees per square feet के आसपास इसका लॉन्च प्राइस, अभी जो मार्केट प्री लॉन्च प्राइस है वो जो है वो आ रहा है, मार्केट इंफॉर्मेशन आ रही है। So let's go to the site now and rest of the details we can always discuss। So this is the site of Adore the Select Premia Sector 77, which is located in the laps of Arauli mountain ranges। NH8 is hardly 2 minutes drive from here। New Gurgaon, all the major amenities and facilities and social infrastructure are in the driving range of 5 to 15 minutes, and you've got schools, hospitals, everything in place। So once this project will be ready, you will have everything in and around it। You will have an ease of access from Dwarka Expressway and NH8 both। You can go to IGI airport either through Dwarka Expressway or NH8। Downtown is hardly 30 to 35 minutes drive in the current situation, but once everything is completed, I think the driving time will be reduced by 5 to 10 minutes। So the next or the final project of this video is by Ganga Realty, which is located in Sector 84, New Gurgaon। New Gurgaon is a name given by the real estate fraternity to the sectors lying between Sector 77, 76 to Sector 95, though they are also a part of Dwarka Expressway because they are developed on the same stretch of Dwarka Expressway, but for an indication purpose it was named as New Gurgaon। New Gurgaon ironically developed earlier and more than Dwarka Expressway and even Southern Peripheral Road। Southern Peripheral Road से पहले डेवलप होने का कारण यही था क्योंकि वहाँ पे यूनिटेक का फेलियर हो गया था और वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट आ नहीं पाई। द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स भी डिले हो गए थे बिकॉज रोड ढंग से बन नहीं पा रही थी, देयर वर लॉट ऑफ लीगल इश्यूज। बट न्यू गुड़गांव was not totally dependent on Dwarka Expressway, it was also connected with NH8, so it was very convenient for people working in downtown areas like MG Road, Cyber City and other areas to commute, and it was a value for money proposition for those people, for service professional, working class, so it developed। So I would say that the social infrastructure and connectivity of New Gurgaon is very good as compared to other developing sectors or areas। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था न्यू गुड़गांव वर्सेस द्वारका एक्सप्रेसवे, यू कैन वॉच दैट, इट विल गिव यू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ आइडिया अबाउट न्यू गुड़गांव। दी ओनली डिफरेंस इज़ कि उसमें मैंने जो प्राइसिंग बताई है उसमें अभी इस टाइम पे काफ़ी चेंज आ चुका है, इनफैक्ट 70% से 100% का इंक्रीज़ हो चुका है प्राइसेस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में। But rest of it is a very good video। We did a lot of research, a lot of hard work, and it was very popular among people as well, a lot of people watched it, so you also watch it।
Now coming to Ganga Realty's project, it has got two approaches. One from Dwarka Expressway, that we will show you from the aerial or the drone view. We took the second approach. हमने सेक्टर 77 अडोर से we hit the NH8 and we took the first right turn towards Vatika India next. So this is a sector road, 60-meter wide sector road, which straight leads to the Ganga Realty project. I mean, it is only, only 1 minute drive away from this sector road. So we are moving towards that now. So we are standing at the interior sector road which leads to the site. It is right behind me. Those blue sheds that you can see behind me is the entrance or the barricading site of the project. This road where we are standing is the dividing road between Alpha G Corp's project Gurgaon 1. The project by Ganga Realty is going to be an ultra luxury project with a size of 2400-2500 square feet of 3.5 BHK. 4 BHK would be around 3000 square feet, and it will have a massive 5000 square feet 5 BHK penthouse as well. The site size is 8.5 acres. They're going to develop an ultra luxury clubhouse of about 55,000 square feet. There'll be only 3 to 4 towers in it, so you will have enough green and open spaces in it. Talking about the location of this project, this is right in the center of the development of New Gurgaon area. You've got DLF SEOs next to it, then you've got M3M83 market right next to it. So all the major social infrastructure is right in place from day zero. By the time you will have your house keys with you, it will have enough development and you can live a life with all the ease and comfort. For more information, you can always contact us on the number flashing below, and we would love to help you out with any other information that you want. And if you are a regular viewer and if you've not subscribed to our channel, then please do subscribe. And if you are new to our channel, then please do subscribe, smash that bell icon so that you get to know the further updates about our projects, project videos that we make in future, and the further updates about all these projects that we covered up today. Don't miss to subscribe and press the bell icon, because we will keep on coming up with awesome video content about real estate. Das Vidanya.